Our lead story tonight. This evening was Prime Minister Modi's turn. He hit back at the Congress party and its leaders, starting from Pandit Nehru. This a week after ex-Congress President Rahul Gandhi had talked of the two Indias created by the Modi government. Prime Minister Modi tore into the Congress party, saying that they haven't accepted their defeat after 2014. He said, in fact, the way the Congress behaves, he feels the party's made up its mind not to return for 100 years, adding that they were the leaders of the Tukre gang. The Prime Minister also listed his government's achievements and said that the Congress and the AAP government had actually spread corona by encouraging migrants to go back to their home states after the lockdown. कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं। हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा, संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। कितने राजनीतिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप मास्क पहनो, हाथ धोना रखो, 2 गज की दूरी रखो। कितने नेता हैं, क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फायदा होने वाला था? Well, Congress leader Rahul Gandhi wasn't in the Lok Sabha. The Prime Minister referred to him often indirectly, but Congress MP Shashi Tharoor, speaking in the Lok Sabha today in the motion of thanks, brought up both Rahul Gandhi's speech last week and quoted from what Prime Minister Modi had said when he was Gujarat Chief Minister. Poorest 20%, down by 53%, the richest 20%, up by 39%. This is what my senior colleague Rahul Gandhi was talking about when he spoke of two Indias. In fact, sir,
This reminds me, since we had the Prime Minister quoting from a distinguished former Prime Minister, let me quote a senior member of this House who used to be a Chief Minister. He said, कहाँ जाएगा मेरा नवजवान, कहाँ जाएगा ये गरीब माँ का बेटा, कहाँ जाएगा, किस देश में रहेगा? किस देश में रहेगा is a very good question to ask the author of these words, who is none other than our Honourable Prime Minister himself, sir. We should ask him, according to his government, the answer for our jobless youth who are facing not just poverty, but an affront to their dignity and their ability to provide for their families today, that they have to wait another 25 years for their Amrit Kal. Meanwhile, also today in Parliament, Home Minister Amit Shah spoke. He asked Owaisi, the Hyderabad MP Asaduddin Owaisi, to take Z category security because he said the Home Ministry feels that he does need it. However, Mr. Owaisi has refused security again, saying that he'll be safe only when Dalits and minorities in the country are safe. दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले ले। दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। As weekly cases fall 45%, schools have reopened in Delhi, UP, Kerala, Odisha, Bihar, Punjab, mainly for senior school. मैं 10th में था जब कोरोना आया था, तो मुझे लग नहीं रहा मैं 12th में आ गया मैम, क्योंकि पता ही नहीं चला कोरोना के टाइम में। बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में जिनके पास मैम फ़ोन नहीं है, मैम नेट इतने वो रिचार्ज इतने महंगे हो गए कि कोई करवा नहीं सकता। बहुत कम बच्चे हैं मैम, तो आना स्टार्ट होंगे क्योंकि आज मैम स्कूल का फर्स्ट दिन है ना, तो इसी मारे तो मैम आधे बच्चे गांव भी गए हैं। हाँ, कोई डरते हैं, किसी के मम्मी पापा भेजते नहीं है। At this school in Delhi, Srinivaspuri, attendance on the first day is thin at around 60%, but the head teacher is confident that it will pick up. Over 90% of the students here between the age of 15 and 18 who are eligible for vaccination have got the first dose. Another cause for optimism, today India recorded less than 1 lakh cases for the first time in a month. However, cases are declining a bit slower than they rose in the third wave, falling by about 15,000 cases per day on average versus an increase of 17,000 per day in early January. Mizoram is the only state where cases are still rising. Ladakh and Jammu Kashmir have still not announced plans to reopen schools, although cases are falling there. With a return to normalcy almost everywhere else, the hope is that we've not made school shutdowns a knee-jerk reaction and we ensure that going forward, schools are the last to close. With Sachin Gupta, Meher Pandey for NDTV. Well, here we're celebrating children going back to school, but in Karnataka, the huge row is that over in many districts, girls wearing hijabs or headscarves are not being allowed into school. What seems to be the major controversy is why things have actually changed. Some colleges say that it was the norm there that girls took off their headscarves and burqas when they entered campus and entered the classroom. Other colleges allowed girls with headscarves in. With no clarity, now a government order says that no religious symbols can be allowed into classrooms. Tomorrow, the Karnataka High Court will hear whether this is legal or not. Students with hijab finally allowed to enter the premises of 3 colleges, but they are for now not allowed to attend class. The students are baffled. They say all this time they were attending classes in hijab as allowed by the rules. आज कुछ अंदर जगह तो अंदर कुछ लेसन कुछ नहीं किया है,
सिर्फ हम लोगों के लिए एक रूम में बंद किया है और जस्ट इतना ही. Is that a classroom? No, it is a hall. It's an auditorium. Yes, Okay. In the auditorium, they asked you to stay there in the auditorium. yes, But no classes for you no all. class. Okay. Didn't you all ask the principal why shouldn't you all attend the classes? No, they told. They are saying only one thing. If you want to join the class, remove your hijab, then come and sit in a class. The college administrators cite the government's new rules, which say that educational institutions have to select uniforms that do not disturb equality and law or order. And so, they're not allowing hijabs or students wearing saffron scarves, a move seen as a counter to the hijab protesters. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, right? You all have left them to sit inside the class without a hijab. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗಲಾಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ. Outside one government college, NDTV found Hindutva activists asking students to carry saffron scarves inside their bags and sport them while inside the college premises. Basically representing ಹಿಂದೂ ಜನ. ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ. Spotting our camera, the police warns the Hindutva activists that they are being filmed. The protests against the government's hijab ban are spreading to Hassan district in the south of Karnataka, where Muslim students protested. Inside a college in Chikmagaluru, east of Udupi, Dalit students clad in blue and in support of hijab faced off against saffron-clad protesters. Hijab versus saffron protests intensified across the state of Karnataka. But tomorrow, the High Court hearing will decide the fate of many Muslim students who are fighting for their right to wear hijab while attending classes. In Kundapur, with camera person Kumar, Shrija for NDTV. And what's happening in Karnataka is being watched keenly in other states. One, of course, is the potential for polarization, which for education at least is the last thing that anybody should want. So what exactly is the situation on the ground in other states, and why is this suddenly flared up as such a big issue in Karnataka? In Jaipur's Ramganj area, at this government school dominated by students from the minority community, headscarves are a common sight, combining with the Rajasthan government's school brown and white uniforms. Across the state, girls with headscarves can be seen attending schools and even university. हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई सख्ती नहीं की, ना हमारे कॉलेज प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कभी ऐसी सख्ती की. Most students from the minority community say getting an education is more important than what they are wearing to school or college. तो मेरे को मेरे घर में ऐसा बोल रखा है कि आप हिजाब ही में ही जाएंगी, वैसे नहीं जा पाएंगी. तो अगर आप किसी का हिजाब रुकवा देंगे तो हो सकता है लड़कियों की पढ़ाई भी रुक जाए. शिक्षा में ना धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है. In Bihar, at the Ayub Urdu Girls School, a minority institution, girls wearing a hijab are a common sight. The Bihar government has issued no order allowing or banning hijabs in colleges. हम लोग के स्कूल करिकुलम में है हिजाब. फेस खुला होना चाहिए. इसका मेरा भी ख्याल है कि फेस ओपन होना चाहिए ताकि कहीं पर आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम ना हो. A similar story in Bhopal's Saifia College, dominated largely by minority students. A healthy mix of hijabs and students without veils. जिसकी मर्जी है वो बाने, जिसकी नहीं है वो नहीं बांधता. And in Telangana too, at this government college in Sikandrabad, university students wearing different dress codes asserting that education is the aim, not what you wear to college. See, we should promote the education and not such activities. We have full rights to wear whatever we want. Clearly, across the rest of the country, the controversy over wearing hijabs or not has not touched students, all of whom appear to be more focused on their studies rather than controversies over dress codes. NDTV Bureau Report. Moving now to our special report. Can you believe that there are over 50 lakh doses of the Covishield vaccine with private hospitals in Maharashtra, and these doses are now close to expiring? What happens now? Why can't they actually be given for booster doses? How can over 50 lakh doses just be lying
with private hospitals. 2 vaccination centers. One is a government-run facility where there is still some buzz, but there is little or no activity at the private vaccine center. लास्ट 1 महीने से हमारा अचीवमेंट जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गई है। पहले जो 1500 से 2000 हमारा एवरेज था, आज वो हमारा एवरेज अराउंड 300 से 500 तक है। और एज ग्रुप ये है कि यंग एज या तो सेकंड डोज के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड के 41 वायल्स और कोवैक्सिन के 28 वायल्स बचे हुए हैं और जो नंबर्स टर्न अप हो रहे हैं पेशेंट्स के वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो स्टॉक अनयूटिलाइज्ड होने के जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी उसका एक्सपायरी भी नज़दीक है, स्टॉक का जो है एक्सपायरी भी नज़दीक है। Data from Maharashtra's health department reveals that private hospitals are holding over 59 lakh vaccine doses. Some 52 lakh are Covishield. Just in Pune, there are nearly 20 lakh doses and nearly 18 lakh doses in Mumbai. Add to this over 7 lakh Covaxin and nearly 4,000 Sputnik doses. There is no indication about when the vaccines expire. The Indian Medical Association says they expire within a month. फरवरी एंड या मार्च में जल्दी अभी एक्सपायर होने वाला है। अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की है और सीरम को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इनके लिए एक अच्छा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। Private centers say there should be a provision to return near expiry vaccines. पिछले 6 महीने से ये देखा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने काफी जगह पर उनके वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा दिए, जहां पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रहा था। तभी लोगों का इवन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लेने से बदले वो सरकारी हॉस्पिटल से लेना ज्यादा पसंद करते गए। सीरम इंस्टीट्यूट के पास वो वापस करने को बोला, लेकिन कंपनी ने ये बात बताई कि उनके जो एग्रीमेंट था उसमें गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी परचेज बैक, ये बात बताई। Cumulative vaccine tally in Maharashtra has crossed 15 crore. Only 54% of the children below 18 eligible for vaccine have taken the first dose. With Pooja Bharadwaj in Mumbai, Uma Sudhir, NDTV.